have great pleasure in introducing Sri Shiv Swami today. He comes from Bombay, India, and he has been holding meditation workshops in London. This is the 4th camp they are holding. This is somewhat different than the other 3, which were held in Penton, Roehampton, and Leicester, in the sense that those 3 were instructed by Swamiji himself directly in Hindi, because the audiences were able to understand Hindi. And this one is different in the sense that there is going to be an interpreter to give the instructions in English. The interpreter is Mr. Vyomesh Bakai, and I have great pleasure in welcoming him to the stage to continue from here. Thank you. Namaskar to all of you. To begin with, I am Vyomesh Bakai. I come from Mumbai with Swamiji, Swami Shibir. This is our first camp, and I am also as novice as you people are, meaning that he will be, normally he says everything, he invokes the divine blessings in him, and his higher souls, his higher gurus, his higher self speaks, and those vibrations are felt by everybody while he is speaking. As he says, there is no language of mother to a child. Similarly, the language of vibration, probably everybody will be able to understand. So I don't think there should be any problem. But even if I do make a mistake, please forgive me. And if I am not able to, because there are some words probably I may be confused, because it's not the same things that he talks. In all the Shibirs, we call this camp, meditation camp, a Shibir in Hindi. So in all the Shibirs, he speaks differently. So whatever comes to him, he speaks. Normally it is going to be an 8-day, normally it's always an 8-day Shibir. First day is the introduction, and then there are 7 days. So, to begin with our Swamiji, our Swami Shibir is an Indian Brahmin coming from Konkan, region in Maharashtra in India, in the southern central India. From his childhood, he always wanted to know and feel God, the supreme energy, the divine energy. And he had lots of questions which very few people, or rather no people, especially his parents, were not able to answer. So, in his childhood, he had started seeking for higher energies. And as he went on, he met many gurus, all the gurus, especially the gurus from Himalayas, the gurus from Kaivalya yogis that he will be telling us. And while in search of God, ultimately he got many siddhis. Siddhis we mean is the perfection in certain energies. And especially while he was with, in Meghalaya, his gurus told him, he met many gurus over there, and when he learned the technique of awakening a soul, when he got the siddhi of awakening the soul, or self-realization, or a kundalini awakening, and when he invited his gurus to come to in the mass people life,
those Guru say to him that we are cook, we will manufacture, we prepare the energies, you distribute it. So his higher gurus made him an instrument in passing on the higher energies to mass people, and that's how he came in front of all of us. The Kundalini awakening, the word Kundalini, it means there is an energy at the base of our spine which is lying dormant. When we took birth, that Kundalini, while we were in our mother's womb, had passed all the chakras and lied dormant at the Swadhisthana chakra. That was Swamiji will be telling us. So that subtle energy has to be subsequently awakened, has to be energized and brought to the Sahasrara chakra. It can be done in many ways. If you chant mantras, it can be done in 15 to 20 years. If you do yogas, hatha yogas, it can be done in 7 to 8 years. But with his kind of personality, with his kind of power, he can do by placing his hand on our Sahasrara chakra or even by looking at us. This is his siddhi, this is his power. That's what we all have come here, and that's what is needed. If we want to achieve our higher knowledge, we have to get our Kundalini awakened, our soul has to be realized. Now the advantages, there are many advantages. To name the few, by awakening our soul, our health improves. A person whose soul is realized, he can never be ill or he can never have ill health. His concentration power also improves, especially for students. This could be very good for students. This could be good for businessmen also. And further, a person becomes a balanced mind. He is in a balanced state of mind, and that helps him in all the spheres of life. If you are in a balanced state of mind, if you meet somebody, even that person comes or becomes in a balanced state of mind. Not to take more time, I'll just tell you about the Shibir. This is an 8-day camp. Today is the first, and then there are 7 days. On every day, Swamiji will be talking about all the chakras, the benefits, that is the advantage, the disadvantages of the chakras. And on the 8th day, when the Sahasrara chakra is opened, he has promised to, because we all are coming from the same vibratory personality, he has promised us to give a very good meditation on the 8th day. This meditation, from the 4th day, it will be a new set of meditation. For the first 3 days, he will not be taking a couple of chakras. On the 4th day, it will be a new set of meditation. That meditation we have to do. If we do it, we can achieve many good results. We will have to fill a form. That is, we have got a prescribed form. We will have to fill those forms, and we expect everybody to come daily, because if anybody doesn't come on one day and comes next day, that chakra is not properly cleared, because Swamiji on all the days, on everybody who are present over here, on day-to-day basis, he will be taking our dirty energy of that chakra on himself, especially the heat of our liver. He will be taking it on himself. So we expect that all of you
be able to come on all the days and achieve the higher energies through him. Now I'll ask our Swami Shibir to start with his discourse. He will be speaking in Hindi. I'll try to convert it into English. To Swami Shibir. आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। Namaskar to all the people who have come here, to all the sacred souls who have come here. आज मैं आपके सामने एक प्रदूषण की बात कहने के लिए आ रहा हूँ। Today he is going to start with his discourse by talking about the pollutions in our life. हमने उद्योगों के प्रदूषण के बारे में पहचाना है, जाना है। We have seen industrial pollutions. हमने वाहनों के प्रदूषण के बारे में जाना है, पढ़ा है। We have seen about and understood about the vehicle pollutions. लेकिन आज मैं विचारों के प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। But he is going to talk about the thought pollutions in our life. इन सभी प्रदूषण से हम जाने अनजाने में जुड़े हुए हैं। In all these pollutions, knowingly, unknowingly, we all are connected with each other. इसका अनुभव भी हमें समय समय पर आता रहता है। Every now and then, we do get experience of the same. जैसे हम किसी बस स्टैंड के ऊपर या सिनेमा गृह में एकत्र होते हैं तो भागने के लिए हम तैयार होते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम खत्म होकर बाहर निकल सके। As if just as we are in some auditorium and we are waiting for the program to get over. क्योंकि जहाँ मनुष्य एकत्र होते हैं वहाँ अनेक विचार एकत्र होते हैं और अनेक विचार होने के बाद वहाँ एक प्रकार का प्रदूषण निर्माण होता है। Wherever there are more people who are collected, there are going to be more thought pollutions. इसी कारण लोग छुट्टी के दिनों में किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। And that is the reason on the holidays, the people go to the hill stations. लेकिन इन प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए, but to experience the escapism from these thoughts, एक नया प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। a new experience is going to, a new जब कोई नया आविष्कार होता है, new experience is going to teach us. Sorry, समझ वापस। मैं आपको एक नए प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। Is going to show us a new way of new experience rather. कोई भी आविष्कार होता है वो पर्टिकुलर किसी देश के लिए नहीं होता है, वो विश्व स्तर पे होता है। Any experiments or any inventions are not for a particular country or it's on totality for a world. क्योंकि उसका लाभ सारी मानव जाति को लेना होता है। Because that advantage everybody, all the human, every human can take. आज मैं उस योग की बात कर रहा हूँ। Today he is talking about that yoga. उस योग के बाद में आपको वो विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। After which you will get a no thought or a thoughtlessness of mind. ये आज एक साधारणतः सभी लोग आरोप लगाते हैं कि नई पीढ़ी का स्पिरिचुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। Everybody have been complaining that the younger generations do not have any spiritual interests. लेकिन आज हमको विचार करने का प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ है। But today we have to think why this is happening. इसका कारण हम स्वयं ही हैं। The reason behind it is we ourselves. आज का युग साइंस का युग है। Today is a science science world. हर चीज आपको प्रैक्टिकल करके प्रूव करके देना पड़ेगी। Everything you will have to show them and prove them practically. आज की पीढ़ी पूछती है कि भगवान है तो उसको प्रूव करके दो। Today
today's generation is asking if there is a God, please prove us. तो कोई भी पिता अपने बच्चे को उसका प्रूफ नहीं दे सकता. So no parent or no father can prove God to their child. और बच्चे के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के हम उत्तर भी नहीं दे पाते. And the questions that the child asks, at times we are not able to reply them. मैंने योग की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है. He has not read any books on or the books and literatures on yoga. मैं आगे के 8 दिन में अपने जीवन के अनुभव आपको बताऊंगा. So all the whatever he is going to talk for all these 7 days, 8 days, it will be through his own experience. मेरे बचपन में कुछ मेरे सामने प्रश्न थे. In his childhood, he had many questions. वो प्रश्न आज भी युवा पीढ़ी के सामने जो के त्यों खड़े हैं. And today also the same questions are lingering with the younger generations. मुझे उस समय भी उसके प्रश्न के उत्तर नहीं मिले थे. आज भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे. At that time also he didn't have the answers for those questions, and today also there are no answers for those questions. इसी कारण से आज की युवा पीढ़ी का स्पिरिचुअल लाइफ से विश्वास उड़ गया. And that is the reason the younger generations have lost faith in God. आज मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ. And today he is going to tell us about those questions. जब वह बचपन में छोटा था, when he was a small child, तो मेरे घर में एक महात्मा जी आते थे. a saintly person used to come in his house. मेरी दादी कहती थी कि वो महात्मा है, वो परमेश्वर के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है. His grandmother used to tell him that those saints are mice of God and God speaks through them. परमात्मा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं था. God was Paramatma, the God was there or not, he was not knowing. वो महात्मा जी परमात्मा के माइक है कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं था. Whether they were the mic of God, that also he was not knowing. लेकिन दादी कहती है उस पर विश्वास था. But because the grandmother used to say, he had faith in her. मैं उनकी सेवा करता था. He used to help the grandmother. लेकिन कुछ दिन के बाद उस महात्मा जी को टीबी हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. But after some days, that saint had a tuberculosis and he was admitted in a hospital. जब मेरी दादी ने मुझे टिफिन दिया और कहा कि ये महात्मा जी को दे के आओ हॉस्पिटल में. And when the grandmother asked him to take a lunch box to that Mahatma ji, तो मैंने पहला प्रश्न पूछा कि दादी अगर तू कहती है वो परमेश्वर के माइक है तो परमात्मा अपने माइक को पहले अच्छा रखेगा, यानी परमेश्वर नहीं है या ये परमेश्वर के माइक नहीं है. so the very first question that had come to him and he had told to his daddy was that if they are God's mic, then how come he was sick, and either they are not, that saintly person was not God's mic. दादी ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि परमेश्वर नहीं है और ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि परमेश्वर के माइक नहीं है. And grandmother was not ready to accept that on whatever he was saying. उसके बाद फिर एक घटना ऐसी हुई. After that, one more incident took place. कुछ लोग हरिद्वार जा रहे थे, वो नाव डूब कर मर गए. Some people were going to Haridwar on a spiritual discourse. तो मैंने दादी को पूछा, सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती है वो तो ठीक है, जो लोग परमेश्वर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर उनको भी नहीं बचाता, भगवान. So when he had gone there during those people had were drowned by while they were going to a spiritual discourse. So Guruji asked, our Swamiji asked his grandmother that if they were protected by if they were going for a godly thing, for a spiritual discourse, how come they were drowned? क्योंकि परमात्मा होता तो कम से कम उनको तो बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. Because if there was a God, at least he would have been there to save. He would have saved those people who had gone to meet him. उसके बाद में मैंने एक मुसलमान फकीर को देखा. After that incident, in another incident, he saw a Muslim fakir or a Muslim priest. वो दूसरे को झाड़ फूक करके उनकी बीमारी ठीक करता था. आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, जात नहीं पूछता था. The Muslim priest used to cure the people coming to him, and at that time he was not asking on what caste or what creed they were. वैसे ही एक
साधु को देखा जो भभूति उठा करके एक ही भभूति से सबकी बीमारियां ठीक करता था. Similarly, we saw one saint who used to lift a bhabhuti and ashes and cure the people coming to him. तो मन में प्रश्न आया कि मुसलमान की अलग पावर है, हिंदू की अलग पावर है. So another question came to him, that is it that Muslims have got different powers and Hindus have got and different powers? और अगर डिफरेंट पावर है तो वो एक दूसरे के धर्मों को लोग कैसे ठीक करते हैं? And if there are different powers, then how come he is able to cure different people from different caste and creed? जब सब दूर से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, when all these questions, all the questions, answers he didn't get, तब मैंने मंदिर में देखा then he saw a person in a mandir. जो पुजारी है वो मूर्ति के सबसे पास में बैठा हुआ है. The person was a pujari and he was sitting next to the idol. तो मैंने सोचा चलो पुजारी से दोस्ती की जाए, उसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जाए. So he said that let me be friendlier to the pujari and get the God's grace. लेकिन दूसरे दिन जब वो पुजारी पूजा करने के लिए हमारे घर आया और 11 रुपए की जगह 51 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया, मैं समझ गया जब ये इतना लालची है तो भगवान कितना लालची होगा. On the next day, that person had come to perform puja in Swamiji's house, and instead of 11 rupees, he started claiming for 51 rupees. So he said that if he is so greedy, then sorry, they are better than me. If he is so greedy, then God could be more greedy. ये सारे प्रश्नों को लेकर ही मैं इस मार्ग में आया. With all these questions, they entered into the spirituality. मैं अलग-अलग संतों के पास गया. He went to different people, different saints. अलग-अलग तीर्थ क्षेत्रों में गया. He went to different religious places. लेकिन वहाँ जाने पे एक टेम्पररी शांति मिलती थी, लेकिन परमानेंट वहाँ रहा नहीं जा सकता था. But after going there, he used to get temporary relief or peace, but he was not able to stay there. ऐसा ही घूमते घूमते जब सब दूर से निराश हो गया तो अपने अंदर ही स्थित हो गया. So after roaming to so many places, he got tired, and that's all. सब दूर से निराश होकर मैं अपने अंदर ही स्थित हो गया, अपने अंदर ही बैठ गया, मतलब अपने अंदर की तरफ देखने लग गया. Yeah. So after going to all the places, he got tired and he started looking for God internally. और जब देखा तो मालूम पड़ा परमात्मा मेरे अंदर ही बैठा हुआ है. And when he started looking internally into himself, he found that the God is within himself. इसी विषय को संत ज्ञानेश्वर ने कहा है. The same thing has been quoted by Sant Gnaneshwar. देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जिणे मुक्ति करी साधिली. मतलब भगवान के दरवाजे जाके तू 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी. The Sant Gnaneshwar has said that you go to the doors of God for 10 minutes and you will get moksha. लेकिन मनुष्य हर दफे शॉर्टकट अपनाता है. But human always finds shortcuts. तो उसने सोचा एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है, उस मंदिर में जाके हम 10 मिनट बैठेंगे और हमको रोज मोक्ष मिल जाएगा. So he said that the mandir is, he interpreted that mandir as a stone mandir, a house where the God lives, and he said, he said that if I be there for 10 minutes, I'll get moksha. जबकि ज्ञानेश्वर जी ने इस पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था. But the Gnaneshwar, the Sant Gnaneshwar had not said, he had not quoted mandir as that stone temple. उन्होंने मनुष्य के शरीर को मंदिर कहा था. He had meant the body of a human being as a temple. और मनुष्य के शरीर का दरवाजा ये तालु भाग है, इस तालु भाग पे 10 मिनट बैठने के लिए कहा था. And he had meant that the door of the mandir is the taluba, the Sahasrara Chakra, and he meant that. अब यहाँ पे 10 मिनट बैठना है यानी क्या? And to sit on Sahasrara Chakra means what? मतलब एक ऐसे अवस्था में बैठना जब आपको पास्ट के कोई विचार ना हो, फ्यूचर के कोई विचार ना हो. It means to be there in such state of mind where you don't think about the past and you don't think about the future.
सब धर्मों के जितने कर्मकांड हैं उनका सबका अंतिम उद्देश्य ये निर्विचार स्थिति पाना ही है. All the religions are ultimately saying that we have to achieve that balanced state of mind where we don't think about the past or we don't think about the future. अब ये सब धार्मिक कर्मकांड करके अगर अपने कोई अवस्था प्राप्त नहीं हो रही है, ये सब व्यर्थ है. So after doing all the rituals or rites and all the religious ceremonies, and if we are not able to achieve that balanced state of mind, then it's no use. देखिए, जैसे कुछ लोग उसके लिए पूजा करते हैं. Somebody performs pujas. अब जैसे मेरे भाई का एक कृष्ण का मंदिर है मुंबई में. His younger brother has got a mandir in Mumbai. वो 5 घंटे पूजा करता है. सुबह 5 बजे से सवेरे 10 बजे तक उसकी पूजा चलती रहती है. He performs pujas for 5 hours from 5 o'clock in the morning to 10 o'clock. एक दिन रात को मैंने उसको पूछा, 5 घंटे में तेरे को निर्विचारता कितने देर रहती है? One night he asked, our Swamiji asked that person that in these 5 hours, for what period or how much time are you able to have no thought or thoughtlessness? तो उसने प्रामाणिकता से कबूल किया, 1 सेकंड भी नहीं रहती. He very honestly agreed that he was not able to have even a moment of no thoughtlessness. जब वो कृष्ण को तिलक करते रहता है, तब भी वो विचार करते रहता है, मैं मेरी लड़की को लड़का ढूंढने ठाणे में जाऊँ तो बोरोली में जाऊँ. Even while putting a tika on a Krishna's head, he always used to get a thought that whether to find a boy for matrimonial purpose, to find a boy for his daughter, he would like to go to a place in Thane or not. मैंने उसका तेरा 5 घंटे पूजा करना बेकार है. Our Swamiji said that whatever 5 hours that you are performing puja is useless because he's not able to get thoughtlessness. तो सब पूजा का या सब कर्मकांड का अंतिम उद्देश्य है आपकी निर्विचार अवस्था प्राप्त होना. So all the religious pujas and ultimately the reason behind we have to achieve the no thoughtlessness. वो निर्विचारता प्राप्त होने के बाद में आपकी आत्मिक प्रगति होती है. Once when you achieve that thoughtlessness in you, you can head towards the spiritual wisdom. आत्मिक प्रगति के लिए विवेकानंद जी ने कहा है, For the spiritual progress, Swami Vivekananda has said, अपने शरीर में एक कुंडलिनी नामक शक्ति रहती है. in our body there is a energy known as Shakti, known as Kundalini. वो 3 प्रकार से जागृत होती है. That can be awakened by 3 ways. पहला मेथड ये है कि आप किसी भी एक देवता का 15 साल तक जाप करो. The first one is that you chant mantras for a single god for more than 15 years. तो धीरे 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 आपका उस नाम के ऊपर एकाग्रता होने लग जाती है. आपके भूतकाल के विचार बंद हो जाते हैं, आपके भविष्य काल के विचार बंद हो जाते हैं. And slowly you are able to have more concentrative power. And so you will stop thinking about the past, you will stop thinking about the future. लेकिन उसके लिए 15 साल लगते हैं. But for that thing, you will have to have 15 years. दूसरा एक मेथड है, आप योग के अगर आसन करते हैं, The other method, the second method is that you do asanas through yoga. तो योगासन से भी वो 8 साल में जागृत हो सकती है. Through yogasana also you can do it within 8 years. और तीसरा एक प्रकार है किसी सद्गुरु का संग. अगर एक सद्गुरु आपके लिए इच्छा मात्र करे, उसके इच्छा मात्र से आपकी जागृति हो सकती है. The third method is if you come in contact with a saintly person, and if that saintly person is even by his wish, he can awaken your Kundalini. इसके लिए मुक्तानंद महाराज ने कहा है, for this Swami Muktanand Maharaj has said, कुंडलिनी नामक एक शक्ति रहती है. The Kundalini named and Shakti or energy is, वो जब बाह्य स्वरूप में रहती है तो आपके हृदय का स्पंदन होता है, आपके श्वास प्रश्वास गतिमान होते हैं. when it is externally, it touches your breath and समझिए क्या? आपके श्वास प्रश्वास गतिमान होते हैं तो हृदय का स्पंदन होता है. It touches your heart if it is an externally. और जब वो सुप्त अवस्था में रहती है तो सोई हुई रहती है. And when it is sleeping, when it is dormant, it is lying idle. और सोई हुई शक्ति को जागृत करने का सबसे आसान तरीका and that
प्रार्थना कर दे, आपको स्पर्श कर दे या आपको इच्छा करे, तो उसकी इच्छा मदद से वो जागृति हो सकती है। If the simple person just makes a wish on your behalf, he can awaken the Kundalini. वो जागृत होने के बाद आपका चित्त पे नियंत्रण हो जाता है। And after that Kundalini is awakened, you are able to have more, you can concentrate more on your thoughts. और चित्त पे नियंत्रण होने के बाद में सब क्रियाएं घटने लग जाती है। And after your, when your concentration is improved, all other things starts taking place. पहले के जमाने में In the old days, ब्राह्मणों के पास ये शक्ति थी। the Brahmins had this power. ब्राह्मणों को समाज में रिस्पेक्ट था, आदर था। The Brahmins had lots of respect from the people. धीरे धीरे उनका चित्त उस शक्ति पे से हटता चला गया। And slowly and steadily, they just धीरे धीरे वो ब्राह्मणों का अटेंशन उस शक्ति के ऊपर से हटता चला गया, तो उनका अटेंशन पैसों में जाने लग गया। And slowly and steadily, the Brahmins started concentrating after money. धीरे धीरे उनकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई। And after they started concentrating on for money, their Shakti went away from them. तो पहले वो शक्ति उनको प्राप्त थी, इसलिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। And because they had that Shakti, they were known as Brahmin. ब्राह्मण और पक्षी इसके दो जन्म होते थे। The Brahmins and birds, they got two. They take birth twice. ब्राह्मण जब माँ के पेट से जन्म लेता था तो उसका पहला जन्म होता था। When the Brahman used to take birth from the mother sperm, that was his first birth. और जब उसका उपनयन संस्कार होता था, उसका कुंडली जागृत होती थी, तो उसका दूसरा जन्म होता था। And when his Kundalini was awakened, that is the thread ceremony. When the thread ceremony was done, he used to take a second birth. उसी प्रकार जब पक्षी माँ के पेट से निकलता था तो अंडे के रूप में पहला जन्म होता था, और अंडे में से बच्चा निकलता था तो बच्चे के रूप में दूसरा जन्म होता था। Similarly, it's the birds. Similarly, the bird takes a first birth when it is in egg form, and the second birth when it comes out of the egg. तो कुंडलिनी एक परमात्मा की शक्ति है। So Kundalini is an energy of God. और परमात्मा का जो कुछ होता है वो एक समान होता है। And God gives everything in a equal, balanced way. दूसरा, वो सब निःशुल्क होता है। And second thing is that it is always free of charge. एक कुंडलिनी नामक एक शक्ति होती है, जब आप आपके माँ के गर्भ में रहते हैं तब वो आपको प्राप्त होती है। The Kundalini Shakti is there when you take birth. It always it comes during that time in you. आपके तालु भाग से वो प्रवेश करती है और सभी चक्रों से गुजरते हुए नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में जाके बैठ जाती है। It enters from the head, and after entering all the chakras, it goes and settles down in the base. जब वो चक्रों में से गुजरती है तो कुछ चक्रों की शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं, कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। And when it starts passing through all the chakras, all the different chakras, some chakras are able to absorb that energy, and some are not. जो चक्र शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जो ग्रहण नहीं कर पाते वो वीक हो जाते हैं। So those chakras which are able to absorb that energy when it is going down, they become strong, and whichever are not able to absorb that energy, they remain weak. अब प्रश्न ये उठता है, आप बोलेंगे कि इतने सालों से जो शक्ति प्राप्त है उसको जागृत करने की क्या आवश्यकता है? So the question comes that the energy which is lying dormant since a long time, why do you want to awaken it? वो जागृत करने की इसलिए आवश्यकता है कि जैसे ही जागृत होगी वो सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार के ऊपर जाएगी। It is necessary because when you awaken it, it will go from the bottom. When it rises up, it will go on passing through all the chakras. इससे सबसे पहला फायदा ये होगा, आपके सब चक्र स्ट्रांग हो जाएंगे। The very first advantage will be that all your chakras will become strong. और जब आपके सब चक्र स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती।
And when all your chakras are fully energized and strong, then there will not be any illness to you. तो मेरे बचपन का जो प्रश्न था उस महात्मा जी को टीबी क्यों हुआ, क्योंकि उनका परमेश्वर से कुछ संबंध नहीं था. When he realized this thing, and the question that one of the question in his childhood he had, that why that Mahatma ji, why that saint had a tuberculosis, he understood the reason that that person, that saintly person, had no connections with God. क्योंकि जिसका परमेश्वर से संबंध होता है, because whoever is connected with God, उसको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती. he cannot have any ill health. मैंने रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों के लिए शिविर लिया था. He had taken a camp for Ramakrishna mission, Ramakrishna mission's doctors. डॉक्टर लोगों ने उनके आदत के अनुसार प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग देश में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या, डायरिया नहीं होता क्या? Doctors had asked him that to ask Swamiji that since you are going to so many different places and visiting so many different areas, do you not get loose powers and ill health? मैंने उनको कहा आप डिसेंट्री डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हैं, मैं जिस बस से आता हूँ उस बस का एक्सीडेंट भी नहीं होता. Our Swamiji said that talking about dysentery or diarrhea is a very distant thing. He went further and said that the bus in which he travels, even that bus cannot meet any accidents. तो उन्होंने अपने मठाधीश से प्रश्न पूछा, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? So those doctors asked their head that how can our Swamiji talk so very confidently? तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी मेडिटेशन करता है उसके आसपास एक ओरा रहता है, हवा मंडल रहता है, उसमें कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती. So the head, that is the Mathadis, said that a person who does meditation, that person's aura is so very powerful that no accident can take place. ये मेरे बचपन का दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि जो हरिद्वार में गए थे उनका परमेश्वर से कुछ कनेक्शन नहीं था. The second question that in his childhood was also answered about the people who had gone to Haridwar, and when those people in Haridwar had met the accident, now he realized that those people had no connections with the God, and that is the reason they had met with the accident. इसको मेडिकली भी प्रूव किया हुआ है. This has been proved medically also. आपको कोई भी बीमारी हो, आप आपका मेडिकल चेकअप करिए, 8 दिन बाद आप आपका मेडिकल चेकअप करिए, आपको ये दोनों के परिणाम नजर आएंगे. He says that before you start with this, you get your medical checkup, and he has done it, this thing especially with diabetes and blood pressure and all. And he says that you get it checked up and do this Shibir, and after the Shibir, there won't be any. तो मेडिटेशन करने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं. So after doing the meditation, the very first advantage is that you will become, you will have a good health. उसके बाद में दूसरा फायदा ये होता है कि आपके अंदर का धर्म जागृत होता है. The second advantage is that the religion in you, the religion in you will awaken. क्योंकि देखिए अंदर का धर्म जागृत होने के बाद में आपको अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाता है. Once when you start looking internally, your internal awareness is awakened. क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है इसके लिए हम कह सकते हैं कि उस धर्म के सभी लोग अच्छे हैं. Because there is no religion in which you can say that everybody in that religion is good. सब धर्मों में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं. In all the religions there are some good people, there are some bad people. जब आपके अंदर का आत्म धर्म जागरूक हो जाएगा, when your own internal religion will awaken, तब आपके हाथ से कुछ गलत कार्य हो ही नहीं सकता. then there won't be any, you will not be able to do any bad things. क्योंकि मनुष्य ने कितने भी कानून बनाए, Because मनुष्य ने कितने भी कानून बनाए तो भी कानून मनुष्य बनाता है और मनुष्य ही तोड़ता है, उसी में से रास्ता भी मनुष्य ही निकलता है. Like human beings have made so many rules and regulations. They themselves make those rules and they bend it and they break those rules and regulations. मैं आपके इंग्लैंड की एक बात बताता हूँ. He is going to tell us about a story of England. लंदन में एक सड़क थी, उस सड़क के ऊपर से 4 घोड़ों की गाड़ी ले आया मना था. A road in London had banned taking a horse cart with four horses cart
पे ये सम्मान वायसराय को ही प्राप्त था। Only the viceroy had the privilege of taking the 4 horses cart on that road. लेकिन उस सड़क के ऊपर से एक जमींदार 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया। And once landlord took 4 horses cart from that road. पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको भी जेल में डाल दिया, घोड़ों को भी जेल में डाल दिया, गाड़ी को भी जेल में डाल दिया। Police caught that person. They put him in jail along with the cart, along with the horses and everything. उसने तुरंत अपने वकील को फोन करके बुलाया, वकील आया, उसने देखा, उसने पूरा उसको आश्वासन दिया, कल मैं तेरे को कोर्ट में छोड़ा दूंगा। That person called his lawyer, and lawyer told him that tomorrow, the next day, he will be able to get him released. दूसरे दिन कोर्ट में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ाया गया कि 4 घोड़ों की गाड़ी इस रोड से ले आना मना है। Next day in the court, it was the charge sheet was read, and it said that a cart with the four horses cannot be taken. लेकिन वकील ने कहा मेरे क्लाइंट ने आपका नियम नहीं तोड़ा है। But the lawyer replied that my client has not violated that law. वो देखिए उसमें 2 घोड़े और 2 घोड़ी हैं। Look that there are 2. Try to look minutely that there are 2 male horses and 2 female horses. तो बाद में जज ने नियम चेंज कर दिया, इस रोड से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है। So the next day the law was changed that nobody can take any horses, whether males or females. इसीलिए मनुष्य उस नियम को बनाता है और मनुष्य उसको तोड़ता है। That is the reason that similarly man makes the rules and regulations and he breaks them. तो जब आपको पता चलेगा ये चीज नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। So when you start knowing about it, you yourself will not do those. क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा करने से नहीं रोक सकती। Because there is no power in the earth which can stop you to do anything bad. उसी प्रकार से मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ। Similarly, our Swamiji doesn't ask you to leave anything and come here. मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आप आपके जीवन में योग को जोड़ लीजिए। He says that you attach the yoga in your life. जो कुछ अच्छा रहेगा वो रहेगा, जो खराब होगा वो छूट जाएगा। So whatever is good will remain and whatever is bad will go. देखिए एक शराब मुक्ति केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ। He had taken a Shibir in drinking I don't know. Alcoholic rehabilitation. Non-alcohol addiction program. वहाँ पे जब कोई एक ऐसा महात्मा आता था, वो कहता था तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। Over there, one of the saints said that if you don't stop drinking, you will not even have a place in hell. एक आधा डॉक्टर आता था, वो बोलता था तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। And one doctor said that if you don't stop drinking, your liver will become bad. लेकिन मैंने शुरुआत ऐसी की, जो आदमी 1 बोतल पीता है वो कल से 2 पीना चालू कर दे। But when our Swamiji started, he said that whoever is drinking 1 bottle of liquor, he can have 1 more. तो सबने ताली बजा के स्वागत किया, ये बोल रहे हैं खूब पिया करो। So everybody clapped and liked our Swamiji because they said, oh, this Swamiji is asking them to, if you are drinking 1, have 1 more. मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको योग सिखाने आया हूँ। He said that he is not come here to ask you to leave, to stop drinking alcohol, but he is come there to teach them yoga. क्योंकि मुझे विश्वास है योग करने के बाद में शराब की आदत ऐसे ही छूट जाए। Because our Swamiji knows and has a full faith that once when you start doing yoga, your habit for alcohols will live. जब आपका आत्म तत्व जागृत हो जाता है, once when your internal self is awakened, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको अंदर से होना चालू हो जाता है। So then what is good and what is bad will automatically you yourself will come to know. इसलिए ये
होने के बाद आपको दूसरा ये फायदा होता है कि आपका धर्म जागृत होता है, आपके हाथ से गलत कार्य होगा ही नहीं। And so the second advantage is that your religion will awaken and you will not be able to do anything that is bad. तीसरा फायदा होता है आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है। The third advantage is that your concentration power improves. जब मैं कोई शिविर करने आता हूँ तो लोग बोलते हैं ये बड़ों में करने की चीज़ है। Whenever he takes any shibir, there are many people who says that this is the this should be done by the old people. बूढ़ों का पूरा जीवन समाप्त हो गया, वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मेडिटेशन में उनको उन्हीं के लिए कैसे हो सकता है? The old people have come to almost fag end of their life, so they are just awaiting for the death. बच्चे अगर इस मार्ग में आएंगे, So if युवा इस मार्ग में आएंगे, तो अगर मन की एकाग्रता होगी, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। So if the kids and teenagers come in this path, they will be able to achieve more. एक बार मैं सातारा के राजा के महल में गया था। Once he had gone to a ruler in Satara in Maharashtra in India, in that Maharaja's place. उसके राजमहल में एक मोनालिसा की तस्वीर लगी थी। In his palace there was a drawing of a Mona Lisa. उस मोनालिसा के तस्वीर में से खूब कूल वाइब्रेशंस आ रहे, ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे। Very cool vibration, very cold vibrations were getting generated from that painting. मैंने मेरे साथ वालों को बुलाया, ये कोई भगवान की तस्वीर नहीं है, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, फिर भी उसमें से कूल वाइब्रेशंस आ रहा है, परमात्मा का चैतन्य आ रहा है। Swamiji called the people with him who had gone there with him and told them that this is not a painting of any god, but yet there are so good vibrations coming from that painting. उस पेंटिंग में से इसलिए चैतन्य आ रहा था कि जिसने वो पेंटिंग बनाई थी उसने अपनी पूरी जान डाल दी थी बनाने में। The reason of good vibrations being generated from that painting was because whoever had painted that picture had done it with full heart in it. जब आप एकाग्र चित्त होकर कोई भी कार्य करते हैं, उसमें परमात्मा का चैतन्य निर्माण होता है। So that means that whenever you do anything with full concentration and full heart in it, the vibrations, the energy of the God gets generated from that one. वैसे मैं आपको एक घर का उदाहरण देता हूँ। He is giving one more example of his जैसे life. आप बोलते हैं कि रमा चाची जैसा अचार बनाती है, ऐसा अचार कोई भी नहीं बना सकता। Just as we say that Rama Chachi or lady, which Rama Chachi is a very common phrase used, that we say that like that person, like that lady, you are not able to cook a food. एक्चुअली आप उसके साथ में जाते हैं, वो जो सामान खरीदती है वही सामान खरीदती है, वो जो मसाले डालती है वो मसाले डालते हैं, फिर भी उसके अचार में जो टेस्ट आता है वो आपके अचार में नहीं आता है। You are taking all the pains of making preparations as that person is making the preparation, but yet your food is not tasting as per that lady's food. एक्चुअली वो अचार बनाते समय अपना अटेंशन डालती है, चित्त डालती है, वो उसको डालते आता है, आपको नहीं डालते आता है, इसलिए उसके अचार में स्वाद आता है, आपके नहीं। So the reason is that while that lady is making the food, that lady is putting all the attention, 100% concentration while making that food. While you are not doing so, your food is not tasting, it's not as tasteful as that other lady's food. तो जब आप मन की एकाग्रता करते हैं, उसी से चित्त शक्ति निर्माण होती है। So the moment you concentrate and you are able to concentrate, और चित्त शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। and that जब आप मन की एकाग्रता करते हैं, तभी चित्त शक्ति निर्माण होती है, और चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है। Only when you are able to concentrate, the God's energy will come in you. और चित्त शक्ति स्ट्रांग होने के बाद में आप जो बोलोगे होगा, आपने बोला ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। And once when your concentration power is powerful, you will be able to achieve whatever you want. सूरत शहर के पास उम्बेर करके गांव है, उस गांव में एक बार मैं गया था। There is a place known as Umbel near Surat, and our Swamiji had been to that place.
उस गांव में जैसे ही प्रवेश किया उसके लेफ्ट साइड में एक मंदिर बना था. The moment he entered in that village, on the left side there was a mandir. उसमें वहाँ के गांव वालों ने 50 लाख रुपए लगाया था, लेकिन वो मंदिर अधूरा पड़ा था. The villagers over there had invested 50 lakhs of rupees in that mandir, but it was incomplete. मैंने गांव के पटेल को पूछा कुछ पैसे की प्रॉब्लम है क्या? पटेल ने कहा नहीं, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के झगड़े चल रहे हैं 1.5 साल से. Swamiji asked the head of that village that why is that? Is there any problem because of the money of that mandir remaining uncompleted? The head of the village said that no, it's because of the fight between the construction and the. दूसरे दिन मैं एक दिशा में गया और चारों दिशाओं को क्लियर किया. Next day, our Swamiji went in all the different directions and he started clearing all the directions, north, south, east, west. इसके बाद में मंदिर में गया, मंदिर में जाके आधा घंटा मेडिटेशन किया और खूब अच्छा चैतन्य वहाँ निर्माण हुआ. And then he went and sat in that temple and he started generating a good vibrations. उस पटेल को मैंने कहा ये 24 घंटे के अंदर ये मंदिर का काम चालू हो जाए. And then he said to the head of the village that now within 24 hours this mandir will start getting reconstructed. वो पटेल ने पूछा कैसे संभव है, इंजीनियर बड़ौदा में रहता है, कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद में रहता है. मैंने बोला कैसे होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 24 घंटे में इसका काम चालू हो. The head of the village said, how is it possible? Because one person, like they both are staying in two different, quite far different cities. So how is it possible? शाम को देखा बड़ौदा से कॉन्ट्रैक्टर आया और काम चालू हो गया, आज तक अविरत चल रहा है. And in the evening it happened that contractor came and started the work, and as of today that work is going on. तो जब मैं मेरी प्रार्थना विश्वास के साथ करता हूँ तो पूर्ण होती है. आप भी जो आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ करेंगे पूर्ण होगी. So when our Swamiji does any prayer with full faith, it is getting fulfilled. Similarly, if you will pray for anything with the full faith, your prayers will also get fulfilled. लेकिन जब ये शक्ति आपको मिलेगी तब आप आपके लिए कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपका नाभि चक्र क्लियर हो चुका होगा. But once when the concentration power will be generated in you, you will not ask anything for you because your navi chakra will be cleaned and cleared. दूसरा आपका आज्ञा चक्र क्लियर हुआ होगा, आप किसी का भी बुरा करेंगे नहीं. Next, your agya chakra will also be cleared, and you will not think of doing bad for anybody. मतलब आप आपके लिए कुछ मांगेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं? दूसरे का अच्छा ही कर सकते हैं. Which implies that once when you are not going to ask anything for you and you are not going to do anything bad for another person, you will always do the good work only. इस प्रकार से चित्त शक्ति स्ट्रांग होने के बाद में जो आप इच्छा करोगे वो पूर्ण होगी. This means that once when your concentration power is improved and become powerful, whatever you want to do, you will be able to do it. क्योंकि एक विश्व चेतना है, जब आपका कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूर्ण करेगी. Because there is a cosmic energy, and once when you are connected to that cosmic energy, whatever you wish, you will be able to do it. ये सब फायदे इससे मिलते हो, लेकिन इस सब फायदों के लिए इस मार्ग में मत आओ. Yes, there are. You can get all these advantages, but he says that do not come in this path because of those advantages. अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए मत आओ. You do not come to cure your illness. अपनी शराब छुड़ाने के लिए मत आओ. Nor to live your alcohols. अपने मन की एकाग्रता के लिए मत आओ. Nor to have a full concentration of your mind. शक्तियां प्राप्त करने के लिए मत आओ. Nor to have any powers. क्योंकि ये ऐसा कोई टारगेट लेके आए, वो टारगेट पूर्ण होने के बाद में आपका ध्यान खत्म हो जाएगा. Because once if you come with some target of any of those targets, the moment those targets are over, your concentration will stop. जैसे मैं किसी पर्पस से आपसे दोस्ती करूं, तो वो पर्पस पूर्ण होने के बाद में दोस्ती खत्म हो जाएगी. Just like if he becomes friendlier with you for some particular reason, the moment that reason is over, the friendship will go away. इसलिए परमात्मा से भी किसी उद्देश्य से दोस्ती मत करो.
So similarly, do not be friendlier with God for any particular reason. मैं भी इस मार्ग में किसी उद्देश्य से नहीं आया था. He also did not come into this path for any particular मेरे को अच्छा लगता था इसलिए करता था. reason. He came in this path because he liked it. और मेरे को मेरे जीवन में इससे सब कुछ मिल गया है. मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपको भी आपके जीवन में सब कुछ मिल जाए. And he has got everything in his life, so he is guaranteeing you that you will also get everything in your life. इसलिए आपको रेगुलर मेडिटेशंस करने की आवश्यकता रहेगी. And so you should regularly meditate in your life. दूसरा, आपने भी अलग अलग मेडिटेशंस किए होंगे, अलग अलग पद्धतियाँ की होंगी. Another that you may also you may be doing some different methods of meditation. लेकिन ये मेथड सीखने के लिए अब आपका सब ज्ञान, सब नॉलेज छोड़ के आना पड़ेगा. But to learn this thought and this meditation, you will have to leave all your thoughts for some few days. जब आप कोई नया मेथड सीखने को जाते हैं तो पुराने मेथड को राह में नहीं देखते हैं. When you want to learn some method, you cannot learn that method in light of some knowledge from other methods. क्योंकि उनको याद रख के इसको सीखेंगे तो इसको पूर्ण ग्रहण नहीं कर पाएंगे. Because if you try to keep that thing in mind and learn this method, you will not be able to learn this method also. वो सब मेथड छोड़ के इसको ग्रहण कीजिए, फिर आपको जो अच्छे लगे वो करिए, वो अच्छे लगे वो करिए, ये अच्छे लगे ये करिए. So you leave all those methods for some few days, for 8 days, and come here. And so whatever you like, and after that thing, if you like, you can carry on with this method. एक शहर में मैं जब जाता था तो वहाँ एक डॉक्टर त्रिवेदी मेरे को मिलने को आते थे. He used to go in one city, and one Dr. Trivedi used to come and meet him. उन्होंने 35 साल से कुंडलिनी शक्ति पे किताबें लिखी थी. That Dr. Trivedi had written many books in his past 35 years. जब मैं वो कुछ कहता था, वो हर बुक्स में उसका अर्थ लगा देते हैं. स्वामी जी ये कह रहे हैं, उस ग्रंथ में वो लिखा है. So whenever he used to ask him, whenever our Swamiji used to tell him something, he used to try to relate it with one of his books. जब 7-8 बार उनसे बातचीत हो गई, So after our Swamiji had talked with him for 7 मेरी थोड़ी times, उनसे दोस्ती हो गई. our Swamiji they had become friendlier. तो एक दिन मैंने उनको हंस के कहा, कल सवेरे अंगूठा छाप बन के आ सकते हो. After Swamiji became friendlier with him, he said that on one day he said to that doctor, "Can you come next day just as a child?" तो दूसरे दिन सवेरे वो 6 बजे आए. So next day he came at 6 o'clock in the morning. मैं खुद मेडिटेशन में बैठा था. वो